So yesterday we have seen the transcription. So before that we have seen the replication. Okay, so we were started with our biochemistry of nucleic acid. In that we have seen the nucleic acid types. Okay, then nucleotides, nucleosides, the DNA, structure of DNA, RNA, we have seen that. Okay, after that we have seen the replication of DNA. Replication means making the identical copies of your DNA. DNA is nothing but genetic material. So genetic information is stored in the DNA. Okay, DNA is wrapped around the histone protein and they form a chromatin. Okay, or genome. Okay, that's all. Now cell cycle. During the cell division, during the mitosis, cell will undergo different phases. Cell will undergo different phases. So we have seen that G0 phase, that is a resting phase. Cell will not replicate on this phase, known as a resting phase. Then G1 phase is there. So G1 phase is nothing but the pre-preparation, means preparation for synthesis. It is a in this G1 phase, cell will prepare required enzymes, required hormones, required factors, etc. Now synthetic synthesis phase or S phase. In this phase, DNA will be replicated, transcripted, etc. So all the synthetic process that will occur in the S phase. Okay. After that, whatever is synthesized, whether it is DNA, RNA, protein, so whether that is a correct synthesis or not, so that will be checked. If it is not, then it is corrected in the G2 phase. G2 phase, and then cell will divide in the mitosis. It is a M phase. M phase means mitosis. So this is a cell cycle. G0 resting phase, G1 pre-preparation, pre or preparation, preparative phase. Yes means synthetic phase, actual synthesis, actual replication of DNA, transcription, translation, that occurs in the yes phase. After that, whatever is synthesized, DNA, RNA, or protein, enzymes, so whether they are synthesized correctly or not. If it is not, then it is a deleted. Okay, so damage is corrected, or imperfections, they are corrected in the G2 phase. And then mitosis, here is actual division of diploid chromosomes into quadra chromosome and a quadruploid chromosomes. That is actual division of cell. So this is a cell cycle. This cell cycle we are going to see again in the chapter known as anti-cancer drugs. Then we will see the anti-cancer drug. Again we will see the cell cycle. Now most of the anti-cancer drugs, okay, most of the anti-metabolite, then alkylating agents, they act on a synthetic phase. Synthetic phase. Most of the anti-cancer act on a synthetic phase. But anti-cancer have different. They act on a different phase, like G1 phase specific, G2 phase specific, etc. etc. So after that we have seen the transcription. We have seen the transcription. This is a cell cycle. You should know the phases of cell cycle. G1, G0, Z1, S phase. Okay. Then we have seen the this genomics and all that. Proteome. Transcription means what? Okay. We have seen the replication means formation of multiple copies or formation of identical copies of your DNA. DNA will be copied. That is known as a replication of DNA. So formation of identical copies of DNA from the parent DNA is known as a, and for a synthesis of new cell, for a synthesis of new cell, for a cell division, आपका एक सेल है, एक सेल से दूसरा सेल बनता है, राइट? सो एक सेल से दूसरा सेल बनता है. तो उस बनने के लिए क्या लगेगा आपको? तो क्रोमोसोम लगेगा पहले, मतलब डीएनए लगेगा. तो डीएनए का रेप्लिकेशन होना जरूरी है. उसके बाद में क्या लगेगा कि उसके बाद में एंजाइम्स लगेंगे, प्रोटीन्स लगेंगे, जो बाकी जो सेल और कंपोनेंट है वो लगेंगे. तो उसके लिए पहले तो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, बाद में डीएनए का कन्वर्जन होता है आरएनए में, ट्रांसक्रिप्शन. Conversion of DNA into RNA known as transcription. Finally, conversion of RNA into proteins known as a translation. So it is known as a central dogma of molecular biology or central dogma of your life. Okay, so that's how. Then after synthesis, there is a division of your chromosomes. Diploid chromosomes will be divided into two equal component quadrupole, and then there is a mitosis, cell division. Okay. So we have seen yesterday this transcription process. So transcription means what? Transcription is synthesis of RNA molecule, synthesis of RNA molecule, or synthesis of hnRNA, heteronuclear RNA, hnRNA. Okay, from the DNA, synthesis of
single stranded RNA from the DNA, known as the transcription. Now, whatever transcription, after transcription, whatever RNA you are going to get, that is known as a primary transcript. Primary transcript, this RNA. Now, this primary transcript needs a modification. So, that is known as a post transcriptional modification. So, addition of poly, A tail, etc. etc. वे introns exon remove करना, capping करना. So, that is known as a post transcriptional modification. We will see that next session. There will be one more session on nucleic acid. So, whatever remaining part I will take on this. We have already seen this transcription. Steps in the transcription: initiation, elongation, and then termination. Elongation, initiation, termination. We have seen this. Yesterday I have told you this promoter region. Okay, what all this. Genetic code also we have discussed yesterday. Features of genetic code also we have discussed. Now we have seen this also. This is nothing but the genetic code. So each codon means they are present on the mRNA. Okay, codon means present on the mRNA. So these codons, this is triplet codon. Okay, codon means triplet codon. It is a nucleotide based sequence present on the mRNA. mRNA के ऊपर जो nucleotide based sequence होता है. So whatever genetic information is there on a DNA, so that is a copied on the mRNA as a complementary copy. Okay, so mRNA is a single stranded. So whatever genetic material is present in the DNA, that is copied on a mRNA and stored in the form of codons. Now each codon, that is a three sequence of your base pairs, that will code for a one amino acid. Means you can say these codons are nothing but the translational language for amino acids. Okay, so each codon will carry one amino acid. Okay, so likewise this, so that is a triplet codon. Okay, so first जो codon होता है, that is a thread at a 5' end. Okay, if you start reading the mRNA का अगर read करना है आपको, if you start reading mRNA, so you have to read from this 5' end. 5' end. So first codon will be, for example, U. Now second codon will be either U or either C or either A or either G, because in the RNA you have uracil, not thymine. Either U or C or A or G. So depending on that, there are these combinations are possible. Let's say yes, sub combination possible. And third codon will be either U C A G. So you have to write this U C A G U C A G. Okay. So likewise that for all these combinations are possible. They will code for one amino acid. जैसे होता है U C, they will code for phenylalanine. U G. Okay, जैसे U क्योंकि यहाँ का 5' end का यूरासिल, now बीच में आया यूरासिल और लास्ट 3' end का यूरासिल, 3' end का भी आया यूरासिल. So known as a U. Then UC है ना, 5' end का U बाद में भी आया यूरासिल और बाद में आया ये साइटोसिन. Like this, different combination. So they will code for a particular amino acid. जैसे ये we have seen yesterday. This is known as a genetic code. We have only 20 amino acids in your nature, which are known as standard amino acids, and out of that also 10 are synthesized and 10 are not synthesized. So out of that 10 are essential amino acids and 10 are non-essential amino acids. Now all these amino acids will have a particular code. There are 64 codes possible, but there are only 20 amino acids. So that's why a multiple code might be available for a particular amino acid. एक अमीनो एसिड के लिए मल्टीपल कोड्स भी अवेलेबल हो सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन सी ओवर हियर all these codons they will code for leucine amino acids. So how many? 1 2 3 4 codons are available for leucine amino acid. Likewise that 4 codons are available for serine, 4 codons for proline, threonine, alanine. Likewise that valine के लिए 4 होते हैं, glycine, arginine के लिए 2 है, serine के लिए ये 2 है. These 4 are for arginine. Out of that, few codons they are known as they will not code for any amino acid. कुछ codons होते हैं they will not code for any amino acids. For example, these three codons
UAA, UAG and UGA. These three codons present on the mRNA. They will not code for any amino acid. They will not code for any amino acid. So they are known as a stop codon, or they are known as a termination codon, or they are known as a nonsense codon. उनमें कोई सेंस नहीं, वो स्टॉप कोडन है. दे आर कोडन फॉर द स्टॉपिंग ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. नाउ as there are stop codon, there are initiation codon also. Initiation codon or known as a AUG. So it will code for methionine amino acid. And remember, this is the initiation codon. Protein synthesis start from this. Okay, initiation codon. So we are going to see it. So the first amino acid to be added is nothing but the methionine because of the initiation codon. Okay, so we'll see it. We have already seen this genetic code. Now we'll see the protein synthesis. So what do you mean by protein? So proteins are nothing but the polymer of amino acids. They are a polymer of amino acids. Now they are joined together by peptide bond. And a polymer of protein are nothing but the polymer of amino acids, and they are joined together by peptide bond. Now protein synthesis is known as a translation. So central of life means replication of DNA and formation of identical copies of DNA. From DNA formation of RNA. From DNA formation of RNA is known as a transcription, and from the RNA synthesis of protein is known as translation. So protein synthesis is known as a translation of mRNA. ट्रांसलेशन मतलब क्या है? अपन फॉर एग्जांपल मैं अगर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, हिंदी में, अगर आप यूएस में गए तो हिंदी नहीं समझ में आएगी, वहां पे उनको समझने के लिए ट्रांसलेटर लगेगा. So whatever language I am speaking, whatever information I am giving to them, they will not understand. They will understand information only in their language. So language of mRNA is nothing but the codes, and its translation is nothing but the proteins. So that's why synthesis of protein is known as a translation process. Proteins are the polymer of amino acids, and they are joined by peptide bond. Okay. Now amino acids are added sequentially. Amino acids are added sequentially in a specific number and specific order based upon the codons present on the mRNA. So whatever sequence of codon are present on the mRNA, that is read, है ना. जो mRNA के ऊपर जो कोडन्स होते हैं वो रीड किए जाते हैं राइबोसोम में, उसके कॉम्प्लीमेंट्री कोडन होते हैं किसमें? tRNA में. So whatever codons are present on the mRNA, so they are read, and उसके जो कॉम्प्लीमेंट्री कोडन होते हैं अपोजिट, मतलब ए अगर है तो उसका अपोजिट, है ना. So complementary codons they are present on the tRNA, and whatever codon that is read by ribosomal RNA on the mRNA. So according to that, tRNA will bring about one amino acid. So what are the requirement for protein synthesis? So protein synthesis means translation. Amino acids are added sequentially in a specific number and based upon the order, based upon the codons present on the mRNA. Okay. Now what are the requirements for protein synthesis? Protein synthesis के लिए क्या क्या लगेगा आपको? सबसे पहले आपको लगेगा, है ना, वो अपन देखेंगे बाद में, पहले देख लो. Now growing and rapidly dividing cells. जो सेल ग्रो हो रहा है या फिर जो सेल डिवाइड हो रहा है, so growing and rapidly dividing cells, they will produce a large quantity of proteins. They will produce a large quantity of proteins. Now RBC जो होता है, red blood cell, does not have any protein synthesis machinery, or whatever RBC does not have any ribosome and all that. So that's why RBC will not synthesize protein, and therefore it cannot synthesize the protein. Okay, RBC will not have. Well, most of the protein they are synthesized in the liver. So whatever proteins are there in the body, so liver will produce a protein. Liver will produce albumin, blood clotting factors, right? They will produce a blood clotting factor and then export into the blood. Okay, liver may be called as a protein factory in the body. So most of the protein that is synthesized in the liver. So liver can be called as a protein factory in the body. For the synthesis of protein, what are the requirements? It's very easy. ना प्रोटीन का क्या, किसका पॉलीमर है? प्रोटीन अमीनो एसिड का. तो कितने अमीनो एसिड होते हैं आपके? 20 अमीनो एसिड. सो व्हाट इज रिक्वायर्ड? फर्स्ट प्राइमरीली रॉ मटेरियल इज नथिंग बट द आपके अमीनो एसिड. सो यू नीड 20 अमीनो एसिड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. ओके, बाद में क्या लगेगा? सो एक तो हो गया 20 अमीनो एसिड्स. दूसरा क्या लगेगा आपको कि आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए,
कौन सा प्रोटीन बनाना है, तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, वो होता है mRNA के ऊपर। दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है, पहला रिक्वायरमेंट हो गया आपका अमीनो एसिड, है ना। फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इज नथिंग बट द अमीनो एसिड, 20 अमीनो एसिड। देन सेकंड रिक्वायरमेंट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इज नथिंग बट द mRNA। देन थर्ड रिक्वायरमेंट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, तो है ना, तो लेकिन आपके पास mRNA है, आपके पास अमीनो एसिड्स है, लेकिन उसको लेके कौन आएगा, है ना। तो लेके आने वाला होता है ट्रांसफर आरएनए। सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट अमीनो एसिड, सेकंड रिक्वायरमेंट mRNA, थर्ड रिक्वायरमेंट इज अ tRNA। नाउ ये सब लेके भी आएगा, आपके पास इंफॉर्मेशन भी है, आपके पास अमीनो एसिड भी है, लेकिन बनाएंगे कहाँ पे, है ना। जैसे होता है ना कि आपको, अगर आपको खाना बनाना है, रोटी बनाना है, तो उसके लिए क्या क्या लगता है, तो है ना, आटा लगेगा, उसके लिए चूल्हा लगेगा, उसके लिए आपका बर्तन लगेगा, उसके लिए तवा लगेगा, सब कुछ है आपके पास, लेकिन आपके पास घर नहीं है, तो वो भी दिक्कत है, आपके पास जगह नहीं है, घर के बजाय जगह नहीं है, तो कैसे करेंगे। वो जगह क्या है, इट इज नथिंग बट द राइबोसोमल आरएनए। सो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, फर्स्ट वन इज नथिंग बट द अमीनो एसिड, 20 अमीनो एसिड। second one is nothing but the mRNA, third one is nothing but the RNA, fourth one is nothing but the factory, that is nothing but the ribosomes. Okay, ribosomes, right. Now for the synthesis of proteins you need certain enzymes and certain factors, so they are also required over there. Okay, so initiation factor, then elongation factor, termination factor, etc, etc. Okay, termination factors are not required in the protein synthesis, because termination codon itself they will terminate. So these are the primary requirement. Reaction mixture में क्या क्या लगेगा, है ना, आप जब पर्टिकुलर सिंथेसिस करते हो तो, है ना, रिक्वायरमेंट क्या क्या लगता है ना, रिक्वायरमेंट लिखते हो आप एक्सपर्ट में। तो रिक्वायरमेंट क्या है भाई प्रोटीन सिंथेसिस के, तो पहले तो आपके पास अमीनो एसिड होना चाहिए, दूसरा आपके पास tRNA होना चाहिए, तीसरा mRNA होना चाहिए, चौथा आपके पास है ना राइबोसोमल आरएनए होना चाहिए, पांचवा आपके पास एंजाइम्स एंड फैक्टर्स होने चाहिए, जो भी फैक्टर लग रहे हैं, राइट। सो दिस इज द रिक्वायरमेंट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, राइट। एम आई ऑडिबल टू यू, एम आई, so requirement for protein synthesis. So what are the requirement? First requirement is nothing but the 20 amino acids. So 20 amino acids. Out of that 20, 10 amino acids they are synthesized in humans, and 10 are known as the essential amino acids. 10 are known as the essential amino acids. So in the prokaryotic cell, in the bacteria, so these 20 amino acids they are synthesized from inorganic content. 20 अमीनो एसिड्स दे आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंटेंट। आपके पास अगर 20 अमीनो एसिड नहीं है, इन केस ऑफ स्टारवेशन, अगर आप भूखे हो, आप स्टारवेशन हो, सो प्रोटीन सिंथेसिस विल नॉट बी देयर। सो इफ एनी वन ऑफ द रॉ मटेरियल और एनी वन ऑफ द रिक्वायरमेंट इज नॉट देयर, सो प्रोटीन सिंथेसिस विल नॉट बी देयर, इट विल बी स्टॉप्ड। देन सेकंड रिक्वायरमेंट क्या लगेगा आपको, अनदर रिक्वायरमेंट इज mRNA. So mRNA will have genetic information, so that is the mRNA will have genetic information. So mRNA will have codons, particular sequence of codons, and according to that only particular type of your protein will be synthesized. So according to the mRNA, protein will be synthesized. Whatever coding sequence is there on a mRNA, so in response to that, same thing will be translated in the form of protein. So protein is nothing but the translation of information, that is a codons present on the mRNA. That's why translation. Okay, then now in the prokaryotic mRNA, lot of only one RNA. Okay, in case of bacteria or in case of prokaryotic RNA, it is a polycistronic. मतलब mRNA जो होता है बैक्टीरिया का, उसके ऊपर एक ही mRNA के ऊपर दो चार प्रोटीन बन सकते हैं, polycistronic. It has a polycoding region, right? But in case of eukaryotic DNA, eukaryotic in case of eukaryotic RNA, so mRNA means आपका ह्यूमंस का और अदर एनिमल्स का, सो हायर एनिमल्स का, यूकैरियोटिक mRNA is a monocistronic. It has only one peptide information. So mRNA will code only one peptide. Polycistronic monocistronic बाद में आएगा आपको. Then next one is nothing but the tRNA. So another requirement is the tRNA. So what is the role of tRNA? It will carry one amino acid according to the codons present on the mRNA. According to the codon present on the mRNA, it will add or it will carry one amino acid as per the code which is read on the mRNA. Then okay,
amino acids. Okay, so they will be covalently bound to the 3' end of tRNA. tRNA और एक requirement क्या होता है, ribosomal RNA, rRNA, where actual protein synthesis takes place. Now you know that ribosomal RNA or rRNA, ribosomes. So you know that ribosomes, they are a component of your रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट. सो राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो राइबोसोम अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं तो आप बोलो मुझे प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होगा. प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे हो सकता है? यस एनीबडी? अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर आपका राइबोसोमल आरएनए होता है तो रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ में होता है राइबोसोमल आरएनए. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है. यस एनीबडी? यस, cytoplasm. So obviously protein synthesis will occur in a cytoplasm only. So whatever protein synthesis is there, so that is occurring in the cytoplasm. Okay, so it is not in a nucleus, but the transcription process, so that is a synthesis of mRNA that will occur in the nucleus. So mRNA is synthesized in the nucleus, that is transcription is done in the nucleus, but translation is done in the cytosol. Okay, cytosolic fraction of your cell. So each mRNA or each tRNA has an anticodon responsible to recognize a codon present on a mRNA. Responsible to recognize a codon present on a mRNA. Now the process also require energy. So energy requirement भी रहेगा. So energy requirements के लिए that is fulfilled by ATP and GTP. So adenine triphosphate, guanine triphosphate. So 20 amino acids is the first requirement. Second requirement is nothing but the mRNA. Third requirement is nothing but the tRNA. Fourth requirement is nothing but the ribosome. Then energy, ATP, GTP. Then protein factors, that is the initiation factor, elongation factor. They are the required. Okay. Then next क्या हो सकता है? Site for protein synthesis. Site for protein synthesis. So that is the ribosomes. Ribosomes. Protein synthesis will take place in the ribosomes, right? Ribosomes. What are ribosomes? They are the nucleoprotein. They are the nucleoprotein. They are the nucleoprotein with 65% RNA and 35% protein. न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं, उसमें भी 35% क्या है? प्रोटीन है. 65% क्या है? RNA है. In prokaryotic cell, in the bacteria, in the microorganism, the cell is a prokaryotic cell. So ribosomes are known as 70s ribosome. In the prokaryotic cell, जो ribosome होता है उसको 70s बोलते हैं. 70s ribosome. Now each ribosome will also have subunit. So major subunit and minor subunit. Ribosome जो होता है उसमें दो subunit होता है, और एक होता है major one, एक होता है minor one. So prokaryotic cell has a 70s ribosome. Now it is divided into two subunits, that is 30s and 50s. 30s and 50s. तो 70s राइबोसोम के दो सबयूनिट हो गए आपके, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला. छोटा वाला जो है उसको 30s राइबोसोम बोलते हैं, 30s सबयूनिट बोलते हैं, और बड़ा वाला जो है उसको 50s सबयूनिट बोलते हैं. व्हाट इज यस? यस इज नथिंग बट द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट. सो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, कोई सेडिमेंटेशन उसका कोएफिशिएंट जिसका 30 है उसको 30s सबयूनिट बोलेंगे, जिसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट 50 है उसको 50s बोलेंगे. So 70s ribosome comprises of 30s subunit and 50s subunit. So this is required because most of the जो antibiotic है, there some antibiotic will bind to 30s ribosomal subunit and inhibit the protein synthesis. Some antibiotic will bind to the 50s ribosomal subunit of bacteria and inhibit the protein synthesis. Okay. Now in case of eukaryotes, in case of higher animals, so ribosome is known as a ATS ribosome. Ribosome is known as a ATS ribosome. ATS, which is divided into two subunit known as a 40s subunit and 60s subunit. तो राइबोसोम जो होता है यूकैरियोटिक सेल में 80s होता है ना, 40s and 60s plus 40s plus 60s, there is a subunit. And prokaryotic cell में 70s होता है, 30s plus 50s, right? Now again protein synthesis in the eukaryotes. Okay, protein synthesis in the eukaryotes is easy to understand. So as like that we have seen the replication in the prokaryotic cell is easy to understand. That's why we have seen that. Now protein synthesis or translation in the eukaryotic cell
is easy to understand. That's why we are going to see translation in the eukaryotic cell. Now ribosomes can split into unequal portions by DDA because later chelates the magnesium ion of the ribosome. तो ये DDA क्या करता है, जो राइबोसोम में मैग्नीशियम आयन है उसको चिलेट करता है. That's why ribosomes can be splitted. Ribosomes can split into two unequal part. Unequal, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा. That's why 30S and 50S, right? Now which requires to hold the subunit together means क्या, ribosomal two subunit होते हैं ना, जैसे 70S राइबोसोम है बैक्टीरिया का, उसके टू सबयूनिट है. कौन से? 30S 50S. They are held together by magnesium ion. They are held together by magnesium ion, right? Now we are seeing the requirements for protein synthesis. Now we'll see the next part. Now in prokaryotic cell, 70S ribosome is there, which is divided into 30S and 50S. In eukaryotic cell, it is 80S, which is divided into 60S and 40S. Now, large subunit of ribosome consists of a L protein plus RNA, and small subunit of ribosome consists of a S protein and RNA. तो उसके लिए L प्रोटीन होता है, इसलिए लार्ज बोलते हैं. जो S प्रोटीन होता है उसके लिए स्मॉल. Now there are two sites on the ribosome. Ribosome जो होता है ribosomal RNA, जैसे RNA का टाइप होता है आपने देखा है, mRNA, tRNA, rRNA. rRNA मतलब क्या, राइबोसोम ही है. So there are two sites on ribosomal RNA or ribosomes. One is the site A and site P. Site A and site P. Site A मतलब क्या, site A is known as a acceptor site. Site A is known as a acceptor site or also known as a binding site for amino acyl tRNA. Amino acyl tRNA. tRNA के ऊपर एक अमीनो एसिड अटैच होगा तो उसको बोलेंगे अपन अमीनो एसिड tRNA. So attachment of amino acid on a tRNA, that is also done by, that is known as activation of tRNA. tRNA activation is done by one enzyme known as amino acyl tRNA synthesis. Amino acyl tRNA synthesis. So what will that enzyme do? That enzyme will catalyze the formation of, or that will enzyme will catalyze the formation of amino acyl tRNA. मतलब क्या, जो tRNA है उसके ऊपर एक 3' एंड जो होता है वहाँ पे एक अमीनो एसिड चिपका देगा, है ना, चिपका देगा. कौन सा पहला होता है, मिथ्योनिन, है ना, मिथ्योनिन लगा देता है. दैट इज नोन एज अमीनो एसिड tRNA. ओके, साइट ए इज नोन एज एक्सेप्टर साइट और अमीनो एसिड साइट सेकंड साइट होता है साइट पी. साइट पी इज नोन एज अ डोनर साइट और साइट पी इज आल्सो नोन एज अ पेप्टाइड साइट. Site P is also known as a peptide site. So it is a binding site for transpeptidyl tRNA. Transpeptidyl tRNA. In the eukaryotes, one additional site is there. So in the eukaryotic cell, there is one additional site known as a E site or exit site. तो राइबोसोमल RNA जो होता है RNA, तो उसके ऊपर कितने साइट होते हैं? 2 साइट होते हैं मोस्टली, एक्सेप्टर साइट एंड दूसरा होता है पेप्टिडिल साइट. बट यूकैरियोटिक जो आरएनए राइबोसोमल आरएनए उसके ऊपर 3 साइड होता है. मोस्टली ये 2 साइड आपके काम की. कौन सी साइड? ये साइड, बिकॉज whatever protein synthesis that is going to we are going to see, so that is we require these 2 sides. Now steps in the protein synthesis में steps कितने हैं? So they can ask you question like this: what is arrange the following step in the protein synthesis by increasing order, decreasing order. Such kind of question they used to ask. Again, they used to ask question like this: prokaryotic ribosome are ATS and comprising of this is subunit. Okay. What are the requirement for protein synthesis? Okay, etc. etc. So they used to ask question like this: what is the initiation codon? What is the stop codon? What is nonsense codon? So they used to ask question like this. Okay. So steps in the protein synthesis. तो प्रोटीन सिंथेसिस के कितने स्टेप्स है, कैसे कैसे हो सकता है प्रोटीन सिंथेसिस, है ना. पहला स्टेप होता है आपका एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड. सो फर्स्ट स्टेप इन द प्रोटीन सिंथेसिस इज नथिंग द एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड. एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड. सो एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड मींस व्हाट? एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड मींस अटैचमेंट ऑफ अमीनो एसिड और attachment of amino acid with the tRNA known as the activation of amino acid. Second step in the protein synthesis, that is initiation of protein synthesis. Initiation of protein synthesis. Initiation. Okay. In that also you have 3 more steps. Okay.
activation of amino acid is a two-step reaction. Activation of amino acid itself is a two-step reaction. Then second step होता है initiation, that is having three step. Elongation is also having three step, and then lastly termination. As we have seen in case of transcription, initiation, elongation and termination, तो वैसे ही step 3 steps in the protein synthesis: activation of amino acid, initiation, elongation and termination, right? Translation occurs in the ribosomes. Okay, translation protein synthesis कहाँ पे होता है? राइबोसोम में. Translation protein synthesis that occurs in the ribosome. mRNA, which consists of the gene code version. So mRNA is readed. It is a read from 5' to 3'. चलो नेक्स्ट होता है आपका ट्रांसलेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस दैट ऑकर्स इन द राइबोसोम्स वेयर देयर इज अ रीडिंग ऑफ mRNA. mRNA is read. mRNA is read from 5' to 3' direction. Whatever codes are there on direction, and polypeptide is synthesized, or it is synthesis of polypeptide, or it proceeds from N terminus. N terminus मतलब amino acid का terminus. N terminus end to the C terminus end. mRNA is read from 5' to 3' end, and protein synthesis occurs from N terminus to C terminus. Okay. Now prokaryotic mRNA is polysystonic. Prokaryotic RNA is a polysystonic. तो mRNA होता है आपका बैक्टीरिया का, बैक्टीरियल सेल का. So it is a polysystonic, means multiple coding regions they are available on the mRNA, and they will code for a different polypeptides. So prokaryotic mRNA is a polysystonic. But eukaryotic मतलब जो आपका हायर लेवल एनिमल का है, so that is a monocystonic. So having only one coding region which will code for a particular single protein. Translation in the prokaryotic cell, it is a very simple, and in the prokaryotic cell translation start before the transcription. Even prokaryotic cell में mRNA बना भी नहीं है, उससे पहले भी वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होता है. ट्रांसलेशन स्टार्ट बिफोर द ट्रांसक्रिप्शन इन द प्रोकैरियोटिक एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक. यूकैरियोटिक में वैसा नहीं होता है. यूकैरियोटिक सेल में पहले प्रॉपर्ली रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड देन ट्रांसलेशन. यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन इज outlined over here, means we are going to see eukaryotic translation. Translation is protein synthesis. Now steps in the protein synthesis. First step क्या होता है? Activation of amino acid. First step is nothing but the activation of amino acid. So formation of amino acid tRNA. Formation of amino acid tRNA. How formation of amino acid tRNA मतलब क्या? कि जो आपका ट्रांसफर आरएनए है उसमें वहाँ पे उसके ऊपर एक अमीनो एसिड अटैच होना. That is catalyzed by one enzyme known as a amino acid tRNA synthase. Amino acid tRNA synthase. एंजाइम क्या करता है? It utilizes the ATP, and it is two-step process. First it will phosphorylate the amino acid, and then it will transfer to a ribosome. Sorry, it will transfer to a tRNA. So formation of amino acid tRNA. अमीनो एसिड tRNA मतलब क्या? जो tRNA है आपका ट्रांसफर आरएनए, उसके ऊपर अमीनो एसिड का होगा, उसको बोलेंगे अपन अमीनो एसिड tRNA. So that is synthesized by amino acid tRNA synthesis. So likewise 20 different amino acids are there. So 20 different tRNAs are there. आपके पास 20 अमीनो एसिड है तो tRNA कितने हो गए? 20. Right? 20 different amino acids, so different 20 tRNAs. So 20 tRNAs are there, and that's why 20 amino acid tRNA synthesis enzymes will be there. Different amino acid tRNA synthesis enzyme. तो जैसे आपके पास 20 अमीनो एसिड है तो 20 अमीनो एसिड कैरी करने के लिए 20 डिफरेंट क्या लगे आपको? tRNA लगे. और जैसे उनको ज्वाइन करने के लिए भी आपको 20 डिफरेंट अमीनो एसिड tRNA synthesis enzyme लगे. Right? Enzymes, now whatever enzymes are there, so this enzyme amino acid tRNA synthesis, so it has a very high specificity. It is having very high specificity because once amino acid is attached to a tRNA, recognition of the specific order on a mRNA is totally depend on the tRNA, not on the amino acid. So particular amino acid जब अटैच होगा ना tRNA के ऊपर, उसके बाद में जो mRNA का जो कोड है ना, mRNA के जो ऑर्डर है वो चेंज नहीं कर सकते. So that's why these enzymes
अमाइनो एसिड टीआरएनए, जैसे आपका फिनाइलएलानिन, सो फिनाइलएलानिन असाइल टीआरएनए से टायरोसिन असाइल टीआरएनए, वो अलग अलग एंजाइम होगा। जैसे ही एमआरएनए के ऊपर कोड रीड होगा वही एंजाइम एक्टिवेट होगी, वो अमाइनो एसिड वहाँ पे टीआरएनए में अटैच करेगा और टीआरएनए लेके जाएगा। सो दे आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर बिकॉज वंस अमाइनो एसिड इज अटैच्ड टू ए टीआरएनए, the recognition of specific order on mRNA is totally dependent on the tRNA, not on a mRNA, or not on a amino acid. Incorrectly activated amino acid tRNAs और incorrectly activated amino acids, अगर गलती से कोई दूसरा amino acid activate हो गया, they are hydrolyzed and not used in the protein synthesis. The amino acid first attached to a enzyme by okay, amino acid first attached to a enzyme. What's the enzyme? Amino acid tRNA synthesis by consuming the ATP, and then it is transferred to a 3' end of your tRNA to form a amino acid tRNA. तो बनता कैसा है amino acid tRNA? How there is activation of amino acids? So for activation of amino acids, because you have 20 amino acids, so you need a 20 tRNAs to carry the amino acid, right? Now you have 20 amino acids, you have 20 tRNAs, so the enzyme which catalyzes the bond formation, which catalyzes the attachment of amino acid to the tRNA, they are also 20, right? They will also have 20. They are very specific in nature, and once they attach the amino acid to the tRNA, so it can, okay, so you know, so that's why they are very specific. And if incorrectly activated amino acid is there, that is big, that is hydrolyzed, and it is not used in the protein synthesis, right? Now this is a two-step process. The activation of amino acid is a two-step process. So what happens in the first step? First, amino acid is attached to an enzyme by breakdown of ATP, then it is a transferred to a 3' end of your tRNA to form a amino acid tRNA. Are you getting or not? समझ रहे हैं आपको? I know. Okay, then next step होता है आपका initiation, because nobody is going to explain you the protein synthesis for GPAT. Protein synthesis नहीं explain करूँगा. Now second step, initiation of protein synthesis. Initiation requires at least 10 initiation factors known as a eukaryotic initiation factor. So for the initiation of protein synthesis, for the starting of protein synthesis, for the beginning of protein synthesis, you require a initiation factors. They are the protein in nature, known as a eukaryotic initiation factor. Some factors are multiple, they are factors are with multiple 3 to 8 subunit. इसमें कुछ फैक्टर होते हैं इनको बहुत सारे सबयूनिट भी होते हैं. इनिशिएशन ऑकर्स इन द फॉलोइंग स्टेप. इनिशिएशन भी होता है ना, तो वो भी उसके भी स्टेप्स होते हैं. इनिशिएशन ऑकर इन द फॉलोइंग स्टेप. फर्स्ट स्टेप होगा आपका राइबोसोमल डिसोसिएशन, बिकॉज राइबोसोम्स जैसे होता है, सो फॉर एग्जांपल इन द यूकैरियोट यू हैव ATS राइबोसोम. सो ATS मींस you are 60S plus 30S in a combination of 60S plus 40S. 60S plus 40S, so it is in a combination. So first they should be dissociated. So first step यहाँ पे initiation में होगा ribosomal dissociation. So ribosomes will be dissociated, two subunits will be separated. Then second step होगा formation of 43S pre-initiation complex. Second step in the initiation, so formation of 43S pre-initiation complex. 43S pre-initiation complex means what? Then third step होता है formation of 40S. Third step is nothing but the formation of 48S initiation complex. Fourth step is nothing but the formation of 80S initiation complex. Okay? So first step क्या होता है ribosomal dissociation. Second step होता है formation of 43S pre-initiation complex. मतलब 40S राइबोसोम जो है वो राइबोसोम में क्या अटैच होता है? फैक्टर्स अटैच होती है, इनिशिएशन फैक्टर अटैच होती है. देयर आर अटैचमेंट ऑफ 3 इनिशिएशन फैक्टर. 40S राइबोसोम में उसको 3 इनिशिएशन फैक्टर अटैच हो गए, तो उसको बोलेंगे 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. नाउ फॉर्मेशन ऑफ 48S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, तो उसको ही आप यहाँ पे mRNA अटैच होगा, mRNA अटैच होगा, तो उसको बोलेंगे 40S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. उसके बाद में इसमें जो 60S राइबोसोमल सबयूनिट बाकी था वो भी अटैच होगा, तो उसके बाद उसको बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ 80S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. देखो पहला स्टेप क्या है,
ribosomal dissociation. So ATS ribosome, which is a eukaryotic ribosome, that is dissociated into two subunits, 60S subunit and 40S subunit. Okay, now initiation factor, eukaryotic initiation factor, that is known as the anti-dissociation factor. As soon as there is a dissociation of ribosomes, जैसे ribosomal dissociation होता है, तो ये initiation factor जो होते हैं, ये फटक से जाके इसको bind करते हैं 40S ribosomal subunit. So this initiation factor will bind to 40S ribosomal subunit, and that's why they are known as anti-association factor. Eukaryotic initiation factor 1A binds to the 40S ribosomal subunit and prevents reassociation. Now अभी क्या बन गया? अभी हो गया आपका ribosomal dissociation. We are seeing the initiation of protein synthesis. In that you have different step. First step is nothing but the ribosomal dissociation. Second step is nothing but the formation of 43S pre-initiation complex. Third step is nothing but the formation of 48S initiation complex, and fourth step is nothing but the formation of 80S initiation complex, right? तो उसमें का पहला स्टेप अपने देख लिया. now next step क्या है देख लेते हैं. Next step is nothing but the formation of 43S pre-initiation complex. Now it is a ternary complex. Ternary मतलब क्या होता है? Ternary मतलब 3 है ना. Ternary मतलब है ना. Binary मतलब 2, ternary मतलब 3. तो ternary complex. Ternary क्यों है कि पहला कौन सा था? पहला था आपका 40S राइबोसोम है ना. 40S राइबोसोमल सबयूनिट. उसको क्या अटैच हो गए भाई? उसको अटैच हो गए 3 इनिशिएशन फैक्टर है ना. 3 इनिशिएशन फैक्टर उसको अटैच हो गए. उसको क्या बोलेंगे? 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है ना. सो टर्नरी कॉम्प्लेक्स ऑफ कंटेनिंग मेट tRNA. इसमें है ना जो पहला इनिशिएशन जो पहला कोडन होता है इनिशिएशन कोडन AUG होता है. ओके, सो व्हाट विल हैपन? सो tRNA which will carry a methionine. ओके, सो mRNA के ऊपर सो ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस जो mRNA रीड होता है ना. ये सब जब इनिशिएशन स्टेप होता है जो इनिशिएशन फैक्टर होते हैं. So whatever these initiation factors are there, so what they will do, they will recognize a particular sequence on a mRNA, right? Likewise that. Okay? तो पहला अमीनो एसिड कौन सा कैरी किया जाता है? आपका मिथियोनिन. So first formation of 43S pre-initiation complex, ternary complex containing tRNA, that is tRNA having methionine. Okay, tRNA that is having AUG initiation codon, then an eukaryotic initiation factor 2 GTP bond plus 40S ribosomal subunit. It will form a 43 pre-initiation complex. 43 मतलब 40S राइबोसोम था उसको और 3 जन अटैच हो गए. कौन से 3 जन? पहला हो गया आपका tRNA, मेट tRNA, मिथियोनिन कंटेनिंग tRNA. तो मेट tRNA एक हो गया. दूसरा हो गया आपका इलोंगेशन फैक्टर, सॉरी इनिशिएशन फैक्टर, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर है ना. इसमें 2 इनिशिएशन फैक्टर अटैच होते हैं. दैट्स व्हाई टर्नरी कॉम्प्लेक्स 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. am I audible to you? Am I audible to you? So what happens? Formation of 43 pre-initiation complex में, so it is a ternary complex containing 40S ribosome plus met tRNA, right, plus initiation factor, eukaryotic initiation factor. So that's why it is a ternary complex. Now eukaryotic initiation factor 3 and initiation factor 1A that will stabilize the complex है ना. ये दो फैक्टर है ना that will stabilize the complex. First step हो गया formation of 43S pre-initiation complex. Now second step is nothing but the formation of 48S initiation complex. 48S यहाँ पे पहले क्या था? 43S था. पहले सबसे पहले डिसोसिएशन होगा किसका? राइबोसोम का. डिसोसिएशन होने के बाद में क्या मिला आपको? 40S राइबोसोम, 40S राइबोसोम, 40S राइबोसोम. उसको क्या अटैच हो गया? उसको अटैच हो गया आपका मेट tRNA, then elongation factors, sorry initiation factors, right? So it will become a 43S pre-initiation complex. Now formation of 48S initiation complex. 48S मतलब क्या है? यहाँ पे mRNA अटैच होगा. So mRNA is attached to a 43S pre-initiation complex. Okay, so to this complex there is attachment of mRNA. Okay, binding of these factors.
eukaryotic initiation factor 4F. It is nothing but it is known as a cap. It is known as a cap. है ना, इसमें ये है, it is a complex of these four factors. है ना, eukaryotic initiation factor F, है ना, 4G, 4A, 4E. It's a factor है. That's why it is known as a cap to the mRNA. And then it is a transfer to 40S3 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. मतलब क्या होगा कि जो mRNA है उसको ये फैक्टर्स बाइंड करेंगे, है ना, ये सब कैप वाला जो फैक्टर है बाइंड करेगा. एंड देन ये mRNA प्लस कैप विल बी ट्रांसफर्ड, विल बी अटैच्ड टू ए 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स टू फॉर्म ए 48S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. राइट नाउ दिस इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स स्कैन्स, ये क्या करता है, स्कैन करता है. किसको स्कैन करता है, ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स स्कैन करता है mRNA को. So this 40S initiation complex will scan the mRNA and identify. क्या identify करेगा भाई? It will identify initiation codon. It will identify initiation codon. कौन सा होता है? That is a 5-AUG. AUG is a initiation codon. So ये codon कहाँ पे है? ये complex देखता है mRNA के ऊपर. mRNA को scan करता है. It will scan the mRNA and it will find out the initiation codon, which is known as a Kozak consensus sequence. It is known as a Kozak consensus sequence. है ना, इसको बोलते हैं Kozak consensus sequence. Right. So this complex 48S initiation complex will scan the mRNA and will find out the initiation codon. Okay. So once it finds the initiation codon, immediately tRNA will be there and there is a methionine. Now second codon जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंगली जो कोड हो उसके अकॉर्डिंगली नया अमीनो एसिड आएगा. Likewise that. So it will. Okay. Second step क्या है फिर, formation of 48S initiation complex. Now third step. Okay. You know, second step हो गया. Third step क्या है, formation of 48S initiation complex. Now fourth step is nothing but पहला step था dissociation of ribosomal subunit. दूसरा step था आपका formation of 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. तीसरा स्टेप था आपका फॉर्मेशन ऑफ 48S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. फोर्थ स्टेप है आपका फॉर्मेशन ऑफ 80S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. तो 80S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स अभी तक क्या है, 43 हो गए, 48 हो गए, अभी 80 है ना. मतलब 80 मतलब क्या है, अभी इसमें और एक अटैच होगा. कौन सा, जो पहले डिसोसिएट हुआ था, है ना, 80S राइबोसोम का डिसोसिएशन होके 60S अलग हो गया, 40S अलग हो गया. 40S को आपका नेट टीआरएनए अटैच हो गया और दो इलांगेशन फैक्टर अटैच हो गए, सॉरी दो इनिशिएशन फैक्टर अटैच हो गए, तो उसको बोलेंगे अपन 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. अगर उसमें एमआरएनए ऐड करेंगे तो उसको बोलेंगे अपन 48S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. और उसमें अगर जो बचा वाला 60S राइबोसोमल सबयूनिट है वो अगर ऐड करेंगे तो उसको बोलेंगे 80S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. इतना सिंपल है. फोर्थ स्टेप इज नथिंग बट द फॉर्मेशन ऑफ 80S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. सो दिस इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स 48S initiation complex it will bind to a 60S ribosomal subunit to form a 80S initiation complex. This requires energy which is obtained from hydrolysis of GTP. There is a release of initiation factor. Now in this step जो भी initiation factor attach हुए थे आपके, initiation factor 2, initiation factor 3 जो भी attach हुए थे, now there is a release of initiation factor bound to the 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. तो यहाँ पे इसमें जो है ना, इसमें जो फैक्टर्स अटैच हुए थे, ये है ना, ये फैक्टर्स, ये वाला एक फैक्टर, these factors, so now they are removed, they are released. Initiation factor, eukaryotic initiation factor 4E 4F responsible for the recognition of mRNA cap and that is a rate limiting step in the translation. तो कभी कभी इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, what is the rate limiting step, slowest step in the particular reaction cycle. So this eukaryotic initiation factor 4E, eukaryotic initiation factor 4F, that is nothing, that is responsible for the recognition of mRNA cap, which is a rate limiting step, in the protein synthesis. इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. Now next you can see over here same thing, है ना, ribosomal dissociation. जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला स्टेप क्या है ना, राइबोसोमल डिसोसिएशन. जैसे 80S राइबोसोम है
वो डिसोसिएट होके है ना 60s और 40s ये दोनों में होगा। 40s में क्या है, इसमें रहेगा आपका मेट टीआरएनए, इसमें अटैच होगा मेट टीआरएनए, मेट टीआरएनए। जैसे फॉर एग्जांपल 40s राइबोसोम along initiation factor, like this initiation factor, eukaryotic initiation factor, then there is attachment of tRNA, met tRNA. So 40s ribosome plus elongation factor plus met tRNA transfer RNA, that is known as a ternary complex or formation of 43s pre-initiation complex. 43s pre-initiation complex. Now formation of 48 48 is initiation complex. Now what is 48 is pre 48 is initiation complex. So this complex ternary complex should be a ternary complex, you can see over here. तो इसमें mRNA ऐड होगा, क्या होगा mRNA, एंड mRNA के एक फाउंडेशन के ऊपर जो है कैप रहता है, वो कैप मतलब क्या है, ये these are the initiation factors, they will bind to a mRNA and they will scan, okay, they will scan, they will scan, okay. ये कैप जब mRNA जब अटैच होगा इसमें, है ना, when mRNA will attach to a 43s pre-initiation complex, so these initiation factors they will bind to the farthest end of your mRNA and they will scan mRNA, स्कैन करेंगे वेयर AUG इज देयर, यहाँ पे AUG कहाँ पे, इनिशिएशन कोडन कहाँ पे, ये इसके लिए स्कैन करेंगे। दैट इज नथिंग बट द 48s इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, 48s इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। देखो यहाँ पे AUG कोडन है, दैट इज इनिशिएशन कोडन। ये क्या है, 40s राइबोसोम है ना, ये क्या है mRNA है ये, और ये क्या है tRNA। tRNA कौन सा है, मेट tRNA। तो फर्स्ट tRNA जो होता है मेट tRNA, मेट मतलब क्या है, यहाँ पे मिथ्योनिन अमीनो एसिड होगा, मिथ्योनिन अमीनो एसिड। नाउ फॉर्मेशन ऑफ ATS इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ ATS इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो अभी ये जो है ना पूरा कॉम्प्लेक्स, इसको ये 68 राइबोसोम अटैच होगा, it will add the 68 ribosome to this 48s initiation complex, so it will become a ATS initiation complex. Are you getting or not? Hello, am I audible? Am I audible to you? Okay, समझ रहा है आपको? Next step is nothing but the elongation. So elongation is the last step. Now amino acid sequence is determined as per the codons present on the mRNA. So mRNA will be read, जैसे पहले तो आ गया आपका AUG के लिए मिथ्योनिन आ गया, AUG will code for methionine. So first initiation codon and first amino acid carried by a tRNA is a methionine. Now अभी क्या है, दूसरा कोडन रीड होगा, so then there is a shifting होगा, there is a read of next codon जो भी होगा उसके accordingly tRNA will move and they will catch one amino acid and they will come. Okay? So amino acid sequence is determined as per the codons present on the mRNA. The process takes place in the ribosome with the high speed and accuracy in the mentioned below step. Okay? Various elongation factors are required for this. Now elongation also occurs in the 3 steps. Elongation में 3 स्टेप होता है। पहला स्टेप कौन सा है, बाइंडिंग ऑफ अमीनो एसिड tRNA to A site. So we have seen that your ribosome has a 2 side, A site and P site. So A site is known as the amino acid tRNA site. So binding of amino acid tRNA site और acceptor site. तो बाइंडिंग जो अमीनो एसिड tRNA है वो A site के ऊपर आएगा, अब राइबोसोम सेपरेट, राइट। So ATS initiation complex contain met tRNA on a P site. जो पहला जो था ना, तो वो कहाँ पे P साइड पे, अभी A साइड एम्प्टी था। बाइंडिंग ऑफ अमीनो एसिड tRNA, जैसे सेकंड कोडन जो है उसके अकॉर्डिंगली एक tRNA अमीनो एसिड को लेके आएगा, तो वो किस अमीनो एसिड को लेके आएगा वो डिसाइड करेगा कोड ऑन mRNA, और वो जो अमीनो एसिड आया है वो आएगा A साइड के ऊपर। अभी P साइड के ऊपर क्या है, ऑलरेडी एक मेट tRNA बैठा है जाके पहले इनिशिएशन को। सो A साइड जो होता है वो फ्री होता है, and another amino acid tRNA is placed at this side. It requires a proper codon recognition. Elongation factor also is required. There is a elongation factor 1A and energy. Okay? Elongation factor 1A and GTP are the
रिसाइकल्ड फॉर न्यू अमीनो एसिड टीआरएनए, लाइक थर्ड कोडन रीड होगा तो उसके अकॉर्डिंगली तो अभी ये क्या ये हो गया, अभी दो यहाँ पे दो टीआरएनए बैठे हैं कहाँ पे राइबोसोम में। एक तो पहला आपका इनिशिएशन कोडन से जो मेथियोनिन लेके आया था वो बैठा है, और अभी जो दूसरा कोडन रीड होके जो भी अमीनो एसिड आएगा वो ए साइड के ऊपर आएगा, एंड ए साइड एंड पी साइड, तो अभी दोनों भी ब्लॉक है, ए साइड प्लस पी साइड, ठीक है, दोनों भी ब्लॉक है। अभी क्या होगा कि ए साइड के ऊपर जो टीआरएनए है उसके ऊपर जो अमीनो एसिड है, और पी साइड के ऊपर जो पहला मिथ्योनिन है उसके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, दैट इज नोन एज अ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। So second step is nothing but the peptide bond formation. So how it is? There is one enzyme known as a peptidyl transferase. It is known as a peptidyl transferase. Peptidyl transferase enzyme. So it catalyzes the peptide bond formation. Peptide bond formation, which is present on the 20s, okay, 20s RNA of the 60s ribosomal subunit. Hence, RNA is also called as a ribosome, which catalyzes the peptide bond formation. इसके बीच में बॉन्ड बनेगा। वेरी इंटरेस्टिंगली देयर इज वन एंटीबायोटिक, एक एंटीबायोटिक होता है उसका नाम है क्लोरमफेनिकोल। देयर इज वन एंटीबायोटिक नोन एज अ क्लोरमफेनिकोल। सो क्लोरमफेनिकोल इनहिबिट दिस स्टेप इन द बैक्टीरिया। सो क्लोरमफेनिकोल इनहिबिट दिस एंजाइम peptidyl transferase enzyme. So it is one of the step in the protein synthesis. Chloramphenicol जो है ना, chloramphenicol that inhibit this step, that inhibit this enzyme and prevent the protein synthesis in the bacteria. So that is additional information. That's why you have to read biochemistry first. You have to understand biochemistry and then you have to understand the pharmacology. Definitely you will understand the pharmacology. Now third step in the elongation is nothing but the translocation. Translocation मतलब क्या? So पहला step था एक मेड टीआरएनए बैठा है पी साइड के ऊपर, दूसरा ए साइड खाली है, ए साइड खाली है तो वहां पे अमीनो एसिड टीआरएनए आ गया अकॉर्डिंग टू द कोडन ऑफ एमआरएनए, वो आ गया तो उनको उन दोनों के बीच में बॉन्ड हो गया, लेकिन बॉन्ड हो गया लेकिन दोनों साइड क्या है वैसे ही पैक है, तो अभी क्या है ट्रांसलोकेशन। आफ्टर द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, आफ्टर द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन राइबोसोम विल मूव टू द नेक्स्ट कोडन, जो राइबोसोम है वो मूव होगा नेक्स्ट कोडन ऑन द एमआरएनए towards the thread. This process is known as a translocation, and this involves the movement of growing peptide chain from A side to P side, A side to P side. अभी जो A side के ऊपर जो अमीनो एसिड आ चुका था वो अभी P side के अमीनो एसिड के ऊपर बॉन्ड हो गया, अभी ये राइबोसोम जो है ना वो नेक्स्ट कोडन के ऊपर जाएगा और दूसरा अमीनो एसिड लेके आएगा, वैसा नया अमीनो एसिड आएगा तो वो भी बॉन्ड फॉर्म करेगा P में, दो P साइड में के ऊपर ऑलरेडी जो दो अमीनो एसिड हो गए उसके ऊपर और एक अमीनो एसिड अटैच होगा, तो वैसे पेप्टाइड बढ़ते जाएगा, जितने भी कोडॉन्स होंगे एमआरएनए के ऊपर उतने अमीनो एसिड लेके आएगा टीआरएनए और वो वैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। दैट्स हाउ देयर इज अ प्रोटीन सिंथेसिस। सो थर्ड स्टेप इज नथिंग बट द elongation. So in the elongation also you have different steps. So that is nothing but the binding of amino acid tRNA at A site, then peptide bond formation and then elongation. Sorry, then translocation. Now next you can see over here same thing. So this is the first codon AUG that will code for methionine. You know, ये क्या है 48S initiation complex है ना, 48S initiation complex। अभी देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ 40S राइबोसोम है, 40S, इसको अपन बोलेंगे 40S राइबोसोम, only 40S राइबोसोम। Now there is attachment of 60S ribosome, 60S ribosome, 68 ribosome to this complex. So when there is attachment of 60S ribosome to all this complex, known as the ATS initiation complex. Now ATS initiation complex has a two side. ATS initiation complex जो है आपका उसमें दो साइड रहेगा, एक रहेगा आपका P साइड, P साइड मतलब जिसके ऊपर ऑलरेडी क्या है मिथियोनिन है, दूसरा रहेगा ये जो साइड है, दूसरा रहेगा A साइड। A side is nothing but the acceptor side, so it will accept, जैसे ये रीड किया यहाँ पे AUG तो मिथियोनिन है, यहाँ तक करेक्ट बैठा। अभी क्या होगा ये AUG इधर शिफ्ट होगा, दूसरा कोडन जो आएगा वो ये रीड करेगा और उसके अकॉर्डिंगली दूसरा अमीनो एसिड लेके आएगा टीआरएनए, तो वो आएगा A साइड के ऊपर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे P साइड है, A साइड इज एम्प्टी, A साइड इज एम्प्टी। So what will happen? So you can see this is the P side and another, okay, A side is empty. So A side के ऊपर यहाँ पे नेक्स्ट अमीनो एसिड आएगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा,
and then translocation. So पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगा, पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एंजाइम, ओके, ए साइड जो खाली है वहां पे नेक्स्ट कोडन जो है, ये नेक्स्ट कोडन आ गया आपका 3, नेक्स्ट कोडन हुए, तो उसके अकॉर्डिंगली नया टीआरएनए आएगा यहाँ पे, नया टीआरएनए किसको लेके आएगा, अमीनो एसिड को, तो ये आया नया टीआरएनए अमीनो एसिड को लेके, उसमें बन गया पेप्टाइड बॉन्ड, फिर ट्रांसलोकेशन मतलब ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा और ये खाली खाली हो जाएगा, उसके यहाँ पे नया कोडन आएगा, नया अमीनो एसिड लेके आएगा टीआरएनए, वैसे ही स्टेप्स कंटिन्यू होते रहेंगे, दैट इज नोन एज अ प्रोटीन सिंथेसिस। तो वैसे ही आपका जितना जितना so whatever length of protein is there according to the mRNA that will be synthesized, okay, you can see over here, now you can see over, so that is known as translocation। so this पहला जो था उसमें ऐसे मिथ्योनिन था पहले, बाद में एलानिन आ गया, तो ये एक हो गया, एक पेप्टाइड बॉन्ड हो गया, यहाँ पे शिफ्टिंग होगा, अभी यहाँ पे साइड खाली है, ये साइड खाली है, तो यहाँ से ये पूरा के पूरा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, देन पी साइड वगैरह पी साइड के ऊपर ही रहेगा, अगेन ए साइड खाली रहेगा, so whatever codon is there, according to that again one more amino acid will be taken up, another amino acid will be taken up, for example like this, ये भी amino acid लेके आएगा, तो ये साइड पे और भी बॉन्ड होगा, फिर से ट्रांसलोकेशन होगा, फिर से एक नया कोडन, फिर से नया अमीनो एसिड, फिर से बॉन्ड फॉर्मेशन, फिर से ट्रांसलोकेशन, लास्टली जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है, whatever if there is a now last step is nothing but the termination of protein synthesis। टर्मिनेशन कैसे होगा, टर्मिनेशन होने के लिए जो एमआरएनए है, ये एमआरएनए उसके ऊपर अगर टर्मिनेशन कोडन आ गया, जैसे टर्मिनेशन कोडन और स्टॉप कोडन, यूएजी यूएजी और यूयूए, ऐसा कोडन आ गया, सो टर्मिनेशन कोडन विल नॉट कोड फॉर अमीनो एसिड, सो any tRNA will not come with amino acid, so that is a stop signal, so at that time there is a stopping of protein synthesis, then you will get your protein, there is a ribosome free, ribosomes are free, 60S will be separate, protease will be separate, mRNA is free, tRNA is free, and your protein is ready। now it is known as a primary translate, it is known as a primary translate, ये जो प्रोटीन बना है पेप्टाइड, ये क्या है, प्राइमरी ट्रांसलेट, इज नोन एज अ प्राइमरी ट्रांसलेट। नाउ इट आल्सो नीड्स अ मॉडिफिकेशन, जैसे अपन ने देखा है ट्रांसक्रिप्शन के बाद में जो आरएनए बनता है एचएनआरएनए, उसको मॉडिफाई की जरूरत होती है, वैसे ये प्रोटीन जो बना है इसको मॉडिफाई कर, सो इट इज अ नॉन फंक्शनल प्रोटीन, नाउ इट इज अ नॉन फंक्शनल प्रोटीन और रॉ प्रोटीन, सो इट नीड्स ए मॉडिफिकेशन, so it needs a folding, refolding, okay, it needs a modification, so that is known as a post translational modification, that is known as a post translational modification। Termination, last step is nothing but termination, how there is termination, so after multiple cycle of elongation and adding of amino acid and formation of specific protein, okay, that is according to the mRNA, formation of specific protein, one of the stopping codon, जो भी stopping codon है, one of the stopping codon terminate the, okay, terminate the or will terminate the protein synthesis or will stop the signal, the stop codon are nothing but the UAA, UGA, and UAA, UAG and UCA that terminate the growing polypeptide chain, here termination factor is not required because mRNA के ऊपर itself जो होते termination codon जब आएगा तब obviously protein synthesis stop होगा, protein synthesis stop होगा, and protein synthesis और भी कभी भी stop हो सकता है if raw material is finished, अगर reaction में आपको raw material जो है reaction चल रहा है और आपका reactant खत्म हो गया है तो reaction क्या होगा, stop हो जाएगा, वैसे ही if there is a okay, if there is a finish, okay, if there is a lack of nucleotides, sorry, if there is a lack of amino acids, amino acids जो है वो अभी खत्म हो गया आपकी बॉडी का amino acid pool है ना, if your amino acid pool is finished then protein synthesis will be stopped again, so any reaction mixture, whatever reaction mixture is requirement over there, so if anything is lacking then protein synthesis will be stopped, and termination codons will not have any, okay, so when जैसे होता है when termination codon will come, termination codon will come, so it will not code for specific tRNA, so okay, they binds to the ribosome at A site and releases the factor like okay, eukaryotic
releasing factor, eukaryotic releasing factor, GTP complex with the peptide transferase, and it will cleave the peptide bond. ये break करेगा peptide bond between the protein and amino acid tRNA on a P site. The H2O is used instead of amino acid to carry the hydrolysis and release of protein. tRNA, ATS ribosome, okay, tRNA. Then ATS ribosome will dissociate, the mRNA will be released. That's how there is a protein synthesis. Okay, you can see again over here. Okay, I will explain the same process again in a 10 minutes. I will explain same process. So formation of amino acid tRNA. First step is nothing but the formation of amino acid tRNA. Formation of amino acid tRNA. Amino acid is there. Then ATP is used. ATP is converted into PPI, pyrophosphate, by using the enzyme amino acid tRNA synthase. Amino acid tRNA synthase. So what will happen? Amino acid and enzyme complex will be there. Enzyme complex will be there. Now this amino acid enzyme complex, amino acid will be transferred to this tRNA. tRNA जो होता है transfer RNA. So on the 3' end of tRNA there is a transfer of this amino acid. So enzyme will be released. तो enzyme यहाँ पर release होगा, AMP release होगा, and you will get this amino acid tRNA. What is amino acid tRNA? So tRNA with the one amino acid. So firstly जो होता है mate होता है यहाँ पे methionine, because initiation codon जो होता है AUG होता है इसलिए. So formation of amino acid tRNA, that is the first step on formation of amino acid tRNA. Now second step, protein biosynthesis. So then formation of 43S pre-initiation complex, and formation of 48S initiation complex, and then formation of 80S initiation complex, right? 40S है ना, ये होता है सब बाद में. पहले तो आएगा आपका टर्नरी कॉम्प्लेक्स. पहला तो सबसे पहला स्टेप तो आएगा आपका ribosomal dissociation. This is 80S ribosome, so it will dissociate into two units. तो पहला यूनिट होता है 40S ribosome, सेकंड यूनिट होता है आपका 68 ribosome. तो 40S ribosome जो है 40S ribosome, उसके ऊपर आपका ये tRNA आएगा, मेट tRNA, एंड यहाँ पे आपका इनिशिएशन फैक्टर्स आएगा. So it will form this 43S pre-initiation complex. 43S pre-initiation complex. Now once 43S pre-initiation complex is formed, then जो mRNA होता है, so mRNA, this mRNA is capped with the piodash end with the certain elongation factor. So that is activated, and this mRNA is incorporated into 43S pre-initiation complex to form a 48S initiation complex. 48S initiation complex में क्या है 48S initiation complex में आपका है ना 40S राइबोसोम, देन एक मेट tRNA, और थर्ड कंपोनेंट है आपका mRNA, और उसमें कुछ फैक्टर्स भी है, elongation फैक्टर्स. तो ये होता है 48S initiation complex. Now to this complex, ये जो डिसोसिएट हुआ है आपका 60S राइबोसोम, वो फिर आके बाइंड करता है, ये भी 60S राइबोसोम भी बाइंड करता है. Now you will get a 80S initiation complex. 80S initiation complex. Now this 80S initiation complex will have two sides. First one is P side. P side के ऊपर क्या है मेट RNA, एंड A side क्या है empty है. तो A side के ऊपर जो भी mRNA के ऊपर कोड रहेगा सेकंड कोडन का, तो उसके अकॉर्डिंगली tRNA will take one amino acid and will come and attach to A side. Then there is a formation of this bond. ना यहाँ पे जो P side है उसके ऊपर जो मिथ्योनिन है, मिथ्योनिन, और यहाँ पे जो नया अमीनो एसिड है वहाँ पे बॉन्ड होगा, और यहाँ से राइबोसोम निकल जाएगा. अभी ये पूरा जो है ना ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, बाद में फिर से ये साइड एम्प्टी होगा. That is known as translocation. We have seen that process. You can see same thing again here. So 80S initiation complex, 80S initiation complex. तो जो यहाँ पे जो P साइड है यहाँ पे, वहाँ पे क्या है मेट tRNA, मिथेनिन कंटेनिंग tRNA, और A साइड जो है that is empty. A साइड is empty, right? कोडन is nothing but the initiation कोडन AUG. तो ये आ गया मिथेनिन लेके. नेक्स्ट कोडन जो आएगा
उसके ऊपर जो भी अमीनो एसिड होगा, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट कॉलम जो है यहाँ पे, नेक्स्ट कॉलम इज फॉर एग्जांपल अमीनो एसिड tRNA according to the next column will take say alanine आ गया, right? Alanine आ गया. Now what happen? Transpeptidase will come in a picture. It will form a bond between these two amino acids, right? Peptide bond. Now what happen? Translocation process. Translocation process किससे होगा? Translocation of this, translocation of this ये जो है ये तो रिमूव हो जाएगा, and translocation of this at this side, translocation of this at this side. यहाँ पे अगर पी साइड जो है वो फिलअप हो जाएगा, ए साइड एम्प्टी रहेगा. सेकंड स्टेप में फिर से अकॉर्डिंग टू न्यू कोडन नया अमीनो एसिड लेके आएगा. इस तरीके से आपका ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन ट्रांसलोकेशन, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन ट्रांसलोकेशन, सो यू विल गेट अ पेप्टाइड लाइक दिस. और जब टर्मिनेशन कोडन आएगा, व्हेन देयर इज अ टर्मिनेशन कोडन, है ना, यू ए जी यू जी ए, है ना, यू सी ए, सो एट दैट टाइम देयर इज अ स्टॉपिंग ऑफ प्रोटीन दिस. तो टर्मिनेशन कोडन जब आएगा वहाँ पे इट विल अटैच, टर्मिनेशन कोडन विल नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड, सो ये एम्प्टी रहेगा, यहाँ पे कोई tRNA लेके नहीं आएगा. एंड टर्मिनेशन कोडन जब आता है तब इट विल आल्सो रिलीज द यूकैरियोटिक रिलीजिंग फैक्टर, यूकैरियोटिक रिलीजिंग फैक्टर व्हिच विल ब्रेक डाउन द बॉन्ड, बॉन्ड ब्रेक कर दिया. सो आपका ये प्रोटीन, आपका जो पेप्टाइड है न्यूली सिंथेसाइज वो अलग होगा. देन देयर इज अ डिसोसिएशन ऑफ राइबोसोम अगेन, 80s राइबोसोम का डिसोसिएशन होगा, 40s अलग होगा, 60s अलग होगा. देयर इज अ फ्रीइंग ऑफ mRNA, देयर इज अ फ्री ऑफ tRNA, दैट इज अ, इट इज नोन एज अ प्राइमरी ट्रांसलेट, इट इज नोन एज अ प्राइमरी ट्रांसलेट. जो आपको जो ये मिला है प्रोटीन उसको बोलेंगे अपन प्राइमरी ट्रांसलेट और प्राइमरी पेप्टाइड, and it is not a functional. There are a lot of changes which has to be done on this protein. Peptide bond formation का एग्जांपल यहाँ पे भी दिखाया है कैसे होता है. दिस इज पी साइड, यहाँ पे पी साइड है, पी साइड के ऊपर एक अमीनो एसिड है और ए साइड के ऊपर अकॉर्डिंग टू कोडन दूसरा एक अमीनो एसिड आ गया ना, ये अमीनो एसिड आ गया. जैसे यहाँ पे मिथ्योनिन है, यहाँ पे दूसरा आ गया. तो ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम इट विल कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड. बॉन्ड कैसे बनेगा? दो अमीनो एसिड से CONH बॉन्ड है ना, NH2 ना, और CONH बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा CONH. नाउ दिस इज एम्प्टी, अगेन यहाँ पे दूसरा कुछ अमीनो एसिड आ जाएगा ये साइड के ऊपर. सो लाइकवाइज दिस सीक्वेंस इज फॉलोड एंड लास्टली यू विल गेट अ प्रोटीन. नाउ इनहिबिट, ओके, आई विल सेव द recording and then we'll take